नमस्कार। इस सीरीज़ की फोर्थ वीडियो में आपको स्वागत है। मैं रथिन विश्वास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की रूबरू की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूं इस सेशन के लिए। हमारा आज का वीडियो है माइंस एक्ट की फोर्थ चैप्टर के ऊपर। ऑलरेडी आप 3 चैप्टर की जो वीडियो है ये आप देख चुके हैं। अगर किसी ने इसको मिस किया है तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके, इसी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के आप इन तीनों वीडियो देख सकते हैं। इसका परवर्ती वीडियो नेक्स्ट आने वाला है जिसको आप देख पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम देखे हैं चैप्टर 4 जो है ये माइनिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइंस, जिसमें सेक्शन 16 to 18 है। इस सेक्शंस के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। इस सेक्शंस के ऊपर ये वीडियो है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4, चैप्टर 2 में इंस्पेक्टर्स एंड सर्टिफाइंग सर्जन्स सेक्शन 5 to 11 एंड चैप्टर 3 में कमिटीज़ जिसमें सेक्शन 12 to 15 हम लोग देख चुके हैं। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 माइन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइन। इस सेक्शन में टोटल इस चैप्टर में 3 सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 16 है नोटिस टू बी गिवन ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस, चैप्टर 17 मैनेजर्स, चैप्टर 18 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर एजेंट एंड मैनेजर्स। इन 3 सेक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद इसका कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लोग देख लेंगे। सेक्शन 16 नोटिस टू बी गिवन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशंस का नोटिस कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कौन देगा, इसके ऊपर ये बताता है इस सेक्शन। सबसेक्शन ऑन द ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन शैल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन गिव टू चीफ इंस्पेक्टर द कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस and district magistrate of the district in which the mine is situated notice in writing in such form and containing such particulars related to the mine as may be prescribed। माइन शुरू करने से पहले चीफ इंस्पेक्टर को अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी को, कंट्रोलर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को माइंस के बारे में, माइंस ओपनिंग के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस देना है। इस नोटिस फॉर्मेट में जाता है। ये रेगुलेशन में इसका डिटेल्स है। सेक्शन सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, एनी नोटिस गिवन अंडर सबसेक्शन 1 shall be so given as to reach the person concerned at least 1 month before the commencement of any noting operation। काम शुरू होने से 1 महीने पहले कंसर्न पर्सन्स के पास ये नोटिस जा सके हैं, इसी हिसाब से ये नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन 17 मैनेजर। Managers serve as may be otherwise prescribed. Every mine shall be under a sole manager who shall have the prescribed qualification, and the owner or agent of every mine shall appoint a person having such qualification to be the manager। मैनेजर का जो क्वालिफिकेशन होगा उसमें एक मैनेजर के सोल अंडर में एक माइंस रहेगा और ओनर और एजेंट माइंस मैनेजर को अपॉइंट करेंगे विथ द क्वालिफिकेशन, प्रोवाइडेड द ओनर और एजेंट मे अपॉइंट हिमसेल्फ एज मैनेजर इफ ही प्रोसेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ओनर और एजेंट को अगर क्वालिफिकेशन है तो उन्होंने भी मैनेजर का हिसाब से अपॉइंट हो सकता है और उनको भी इसमें अपॉइंट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू एनी इंस्ट्रक्शन गिवन टू हिम by or on behalf of the owner or agent of the mine, the manager shall be responsible for overall management, control, supervision and direction of the mine
and all such instruction when given by the owner or agent shall be confirmed in writing forthwith. माइंस मैनेजर माइंस की ओवरऑल मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ओनर और एजेंट्स जो डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन को देंगे उस हिसाब से चलेगा, और ये इंस्ट्रक्शंस रिटेन वे में आना चाहिए। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी छोड़ करके, आपातकालीन स्थिति छोड़ करके, द ओनर और एजेंट ऑफ ए माइन और एनी on his behalf shall not give otherwise than through a manager instruction affecting the fulfillment of his statutory duties to a person employed in a mine who is responsible to the manager. ओनर और एजेंट इमरजेंसी केस छोड़ करके और एनी ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर जो मैनेजर के थ्रू ही केवल ये इंस्ट्रक्शंस दे जिसमें मैनेजर का स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो फुलफिल करने में इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन जो भी पर्सन माइंस में काम करता है, माइंस में एम्प्लॉयड है, उसको अदर देन मैनेजर उनको ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाए। ये सबसेक्शन 3 अब सेक्शन 17 बताते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। सबसेक्शन 1 बताते हैं द ओनर एंड एजेंट ऑफ एवरी माइन शैल इज be responsible for making financial and other provision and takes such other steps as may be necessary for compliance with provisions of the act and regulation, rule, bylaws and order made thereunder. यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंस मैनेजर का नहीं है। फाइनेंशियल प्रोविशंस करना, अदर प्रोविशंस करना, जो एक्ट, रूल, रेगुलेशंस, बायलॉज के ऑर्डर का जो फैसिलिटीज़ है इसके इंश्योर करने के लिए ये ओनर और एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माइंस मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर प्रोवाइड इन द रूल मेड अंडर क्लॉज D, E and P of section 58 shall be exclusively carried out by the owner and agent of the mine and such person other than manager whom the owner or agent may appoint for securing compliance with the aforesaid provisions. ये क्लॉज D, E and P क्लॉजेस में जो सेक्शन 58 में जो दिया हुआ है, खास कैंटीन, क्रेस, पीठेद, ये सारे चीज़ों के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, और इसके लिए जो 7 पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे और अदर देन मैनेजर होना चाहिए। सबसेक्शन 3 बोल रहा है इफ द कैरिंग आउट ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 2 और गिवन अदरवाइज देन थ्रू मैनेजर अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ section 17 results in contravention of the provision of this act or the regulations, rule, bylaws or order made thereunder, every person giving such instruction shall also be liable for the contravention of the provision concerned. अगर किसी ने मैनेजर को बाईपास करके कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इसके लिए भी जिम्मेदार रहेंगे। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, 2 and 3 द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल is be responsible to see that all operation carried in connection with the mine and conducted in accordance with the provisions of this act, of the regulations, rule, bylaws and order made thereunder. So it's responsibility to the owner, agent and manager to see operation proper जो provisions है फॉलो करके कर रहा है। इन द इवेंट ऑफ एनी कंट्रवेशन बाय एनी पर्सन whosoever of any of the provision of this act or of the regulation, rule, bylaws, order made thereunder, except those who is specifically required any person to do any act or thing or prohibit any persons from do any act or thing beside the person who
contravenes each of the following persons shall also be deemed to be guilty of such contravention unless he proves that he had used due diligence to ensure compliance with the provision and had take reasonable means to prevent such contravention. This is somewhat different. The mindset is somewhat different from the IPC. Here you have to prove that you have taken all the due diligence. The official or officials appointed to perform duties or supervision in respect of provisions contravened the manager of the mine, the owner, agent of the mine, the person appointment, if any, to carry out the responsibility of the succession 2, provided that any of the persons aforesaid may not proceed against if it appears on inquiry and investigation that he is not prima facie. Next subsection 6 क्या बोल रहा है, it shall not be a defense in any proceedings brought against the owner or agent of a mine under this section that the manager and other official have been appointed in accordance with the provision of this act, or that a person to carry the responsibility of the section 2 has been appointed. These are the provisions in this chapters. Next we will learn some of these question. हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. First, notice of commencement of any mining operation shall be given so as to reach the person concerned at least dash months before commencement of mining operation. 3 months, 1 month, 6 month, 2 month. The correct answer is 1 month, and under section 16 of the Mines Act we see the notice should be given in such a way that it should reach to the person concerned before 1 month, at least 1 month before commencement of the mining operation. So correct answer is 1 month. Next, the notice of commencement of mining operation shall be given to Chief Inspector, Indian Bureau of Mines, the district magistrate of the district. In this option, option only A and B is correct, B and C is correct, A and C is correct, or A, B, C, all three are correct. Correct answer is A, B and C. All these three statements are correct, and it's written in section 16 of the Mines Act. Next question, the submission of the notice of commencement of any mining operation is mandatory under section dash of the Mines Act. Section 16, 17, 18, 19. The correct answer is 16. Section 16 of the Mines Act tell that this notice should be given by the owner, agent or manager. Next question, choose the correct statement regarding appointment of manager under section 17 of the Mines Act. Statement A, if prescribed qualifications, owner and agent of the mine appoint himself as a manager. Appointment of manager by owner and agent of the mine. Responsibility for overall management, control, supervision and direction of the mine. Manager responsibility. Except in emergency, instruction to any person from the owner or agent shall come through the manager. We see the options. Only A is correct. B, C and D are correct. A, C and D are correct. All the options A, B, C, D are correct. The correct answer is all the options A, B, C and D are correct, and we can find this in section 17 of the Mines Act. Next question, choose the correct statement regarding duties and responsibility of the owner, agent and manager under section 18 of the Mines Act. Financial provision for compliance with Mines Statute. Option B, appointment of manager by owner and agent of the mine. Option C, responsibility of overall management, control, supervision and direction of the mine. Option D, except in emergency, instructions to any persons from owner or agent shall come through the manager.
Option A and B statement are correct. Option B and C statement are correct. Option C, B and C, A and C, D, all the options A, B, C and D are correct. The correct answer is option D, all the options A, B, C and D are correct, and we can see it under section 18 of the Mines Act. Next question, which of the following facilities provided in the mine does not belong to the manager under section 18 of 1952? Pithead, canteen, training, crèche. Option A, B and C are correct. Option A, B and D are correct. Option B, C and D correct. Option C, D and A correct. The correct answer is option A, B and D. Pithead, canteen and crèche, these are the responsibility for owner or agent but not manager. Training, for training, manager is also responsible. Next, who is responsible to provide the facilities of mine, crèche, pithead and canteen under the Mines Act? Option A, owner, agent and manager. Option B, owner and agent. Option C, agent and manager. Option D, owner, agent and contractor. The correct answer is owner and agent. We have discussed it under section 18. The owner and agents are the person concerned. Thank you for seeing this video. आप अगर कोई मिस करते हैं, कुछ वीडियो नहीं देख पाते, पुराना जिस चैप्टर्स का वीडियो है वो आप यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। अगर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है एक एक करके शेड्यूल के हिसाब से ये अपलोड हो जाएगा, आप उसके देख पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो प्रयास है ये HRDC की रूबरू के तरफ से प्रयास है। जो इस बार स्टैट्यूटरी एग्ज़ाम दे रहे हैं इनके लिए कुछ मददगार साबित हो सकता है ये वीडियो। एक्सक्लूसिवली ये हेल्प करने के लिए बनाया गया, ये कंप्लीट कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स है। आप इसके मदद ले सकते हैं, बट कम्प्लीटली इसी वीडियोस के ऊपर, इसका सैम्पल क्वेश्चंस के ऊपर आप 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। माइनिंग एग्ज़ाम में आपका सफल आ जाए, आप एक अच्छा से मार्क्स ले करके इस एग्ज़ाम पास करें, ये हम चाहते हैं, इसी के लिए प्रयास है। अगर आपको डिटेल कुछ बोलना है, हमसे कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी में आप मेल करेंगे। हमारा HRDC की टीम आपको ज़रूर मदद करेंगे और आपके एग्ज़ाम के एक अच्छा सा रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं आप इस एग्ज़ाम को अच्छा से पास करें। और कुछ क्वेरीज होगा तो आप ज़रूर मेल करें। थैंक यू।